54 rivers, India and Bangladesh, two densely populated countries in South Asia. Indian Prime Minister Narendra Modi has recently visited Bangladesh in celebration of 50 years of independence of the country. However, as always, the high-profile visit failed to address the river water sharing dispute. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आप सबको पता है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान में वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा इशू है और आज भी भारत बांग्लादेश के हिस्से के पानी को चोरी करता है और आज भी मगरबी बंगाल के अंदर ऐसी नहरें खोदी जाएंगी जहां पर बांग्लादेश के हिस्से का पानी छोड़ा जाएगा और बांग्लादेश को वो पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यूएनए के अंदर बांग्लादेश की बच्ची फतीहा आयात ने क्या खूब मुकदमा लड़ा बांग्लादेश का और भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह भारत बांग्लादेश के हिस्से के पानी को चोरी कर रहा है और बांग्लादेश के मुस्तकबिल को बिल्कुल बंजर बनाने में काम कर रहा है। इस तरह नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हिस्से के पानी को चोरी करके भारत के इस्तेमाल में ला रहा है और बांग्लादेश को बंजर बनाने में भारत का किस तरह हाथ है। और यूएनए के अंदर फतीहा आयात ने क्या खूब मुकदमा लड़ा बांग्लादेश का और वाटर शेयरिंग के ऊपर जब कॉन्फ्रेंस के अंदर बांग्लादेश की बच्ची को बोलने का मौका मिला तो किस तरह बांग्लादेश के हक की बात की गई। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी May I call on Fatiha to speak on water for the next generation? Today, we are discussing here about the collaboration for water resilience. But let me start with a daunting example about the lack of collaboration so that we can understand why collaboration is so important. Despite sharing 54 rivers, India and Bangladesh, two densely populated countries in South Asia, have not signed a single bilateral treaty on water sharing in the last quarter of a century. They have not discussed the river water sharing issue through their common platform, the Joint River Commission, for the past 10 years. What could be a worse example of the lack of collaboration than this? Indian Prime Minister Narendra Modi has recently visited Bangladesh in celebration of 50 years of independence of the country. However, as always, the high-profile visit failed to address the river water sharing dispute, which is currently the most important bilateral issue facing India and Bangladesh today. I, as an 11-year-old child rights activist and climate campaigner, am truly worried about the future of water that my generation has to encounter. This is why I am scared, anxious, and worried, and I am raising my voice. Let me tell you a little more about this. Then you will understand and realize my point of concern. In 2011, India agreed to share 37.5% of joint waters, while retaining 42.5% of waters during the lean season between December and March. However, that deal never went through. Bangladesh is not receiving its fair share of water. Moreover, constant building of dams along the upstream of the Tista River and the diversion of water for several hydropower projects has resulted in lean seasonal flow draining into Bangladesh. Since Bangladesh is a low riparian country, it is naturally sensitive about transboundary water issues as it leads to adverse impacts on agriculture, fishing, and the overall livelihood of people in Bangladesh. It's not only the Tista River. India and Bangladesh share numerous amount of joint rivers, including the Ganga, Brahmaputra, and others. Water sharing has been a contentious issue between these two countries for decades.
India is not adhering to bilateral agreements and is failing to share water in a fair and equitable manner. Additionally, environmental degradation, climate change, and unplanned urbanization has exacerbated the problem, leading to increased river erosion, water logging, and salinity intrusion in the coastal belt. Thus, the lack of collaboration between India and Bangladesh has had significant negative impacts on Bangladesh, as the country flooded when India released the dam, and Bangladesh was in a severe drought when India closed the dam. The lack of collaboration between India and Bangladesh has also led to mistrust and tension between the two countries, and this has made it difficult to find a mutually acceptable solution to the water sharing issue. The water sharing dispute remains unresolved, causing strain between the relationship between India and Bangladesh. I'd like to end my speech today by mentioning how it feels and reminding everyone how it feels when you are thirsty and there is no water to drink. Especially today, just a day before Ramadan, when Muslim people will fast from sunrise to sunset without drinking a sip of water. I'd like to conclude my speech by mentioning a very short verse from the Holy Quran, chapter 25, verse 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. And this means, it is He who released the two bodies of water, one sweet and fresh, and the other salty and bitter. And He has set a partition and a complete barrier between them. So, dear audience, let's not pollute and destroy the sweet water that we all know we need for the survival of our planet. I hope everyone was in a listening mode. I think the message is clear that we all need to work together to protect, and let us mean when we say we collaborate. I think that was the message. Thank you, फतीहा। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर फतीहा आयात ने किस तरह बांग्लादेश के हक की बात की और यूएनए के अंदर बांग्लादेश के हक की आवाज को उठाया कि किस तरह भारत बांग्लादेश के हिस्से को पानी चोरी कर रहा है और किस तरह वादा करने के बावजूद बांग्लादेश को वो पानी नहीं दे रहा जो बांग्लादेश का राइट है, जो बांग्लादेश का हक है। और यहाँ पर बांग्लादेश के हक की बात की जा रही है, यहाँ पर तिस्ता नदी के मामले की बात की जा रही है और भारत का वो मकरू चेहरा जिसमें नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का विजिट करते हैं तो बांग्लादेश से बड़े बड़े वादे करते हैं और जब भारत वापस जाते हैं तो उन्हीं वादों से मुकर जाते हैं। वही वादे जो बांग्लादेश में किए होते हैं, वही दोस्ती की बातें जो बांग्लादेश में करता है और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के टाइम पे वो भूल जाता है। और आज भी बांग्लादेश की ज़मीन को बंजर बनाने में भारत का पूरा हाथ है और आज बांग्लादेश के हिस्से का पानी भारत के अंदर रोक लिया जाता है, भारत को वो पानी इजाफी दे दिया जाता है और बांग्लादेश के हक के पानी के ऊपर आज भी डाका डाला जाता है। आज भी बांग्लादेश के हक के पानी को चोरी किया जाता है और आज भी बांग्लादेश के साथ झूठे वादे किए जाते हैं और यूएनए के अंदर फतीहा आयात ने बांग्लादेश का मुकदमा इस तरीके से रखा। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।